Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to start the chapter Heredity and Evolution for class 10th. We have studied in the previous chapter that living organisms reproduce to make more of their own kind. Means एक organism reproduce करता है जिससे वो अपनी ही तरह के और organism बना पाए. That means जो young one produce होते हैं वो parents के similar होते हैं. Right? So just to be similar to their parents, the young one gets some of the characters like height, complexion, shape of hair, color of eyes, shape of nose, chin, etc. from their parents. So the transfer of these characters from parents to their offspring is known as heredity. जो मटेरियल इस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी कर रहा है दैट इज नोन एज डीएनए. इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड फीमेल प्रोड्यूसेस एग and both of them, egg and sperm, combine together to form a structure that is zygote. So a zygote is carrying the genetic information of both the parents which ultimately grows into young one. एक हमारी जो न्यू जनरेशन है वो दोनों पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल ले रही है और काफ़ी हद तक वो पेरेंट्स से रिजेंबल भी करते हैं. मीन्स दे लुक वेरी क्लोजली टू देयर पेरेंट्स, राइट? बट स्टिल there we see some of the differences in maybe in the height, maybe in the skin color, maybe in the shape of the nose or earlobe that is attached or floating. So these are the differences seen between the characters or traits among the individual of a species, that is called variation. So there is a branch of science that deals with the study of this heredity and variation known as genetics. Why do these variations occur? Reproduction का बेसिक प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग, राइट? और डीएनए कॉपिंग के टाइम पर कुछ एरर्स आते हैं. Those errors leads to these changes in the characters of the next generation. So variation का बेसिक कॉज क्या है? Occurrence of errors during DNA copying. Okay, और ये variations may be useful or harmful for the organism. If they are useful for that particular organism, so they give them a survival benefit. They help them to survive in the adverse condition. And if they are not useful to them, the organism may die and become extinct. For example, we have some bacteria living in the pond, okay, and suddenly the temperature of the worm changes. Now in that pond हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं which are having the variation to bear that high temperature. Means कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसी वेरिएशन आ गई जो उन्हें उस हाई टेम्परेचर को बियर करने में हेल्प करेगी. So what will happen? Those bacteria will survive in that high temperature also, but others will die. So the variation which help those bacteria to survive is said to be naturally selected. Okay, because it has given some advantage to survive. So that variation gets accumulated in that particular organism and passed to the next generation too. Like we have some beetles feeding on green leaves of some bushes. So by variation, one of the beetle become green colored. Okay, and what happens here? These beetles are usually eaten by the crows. So crow can pick those red or brown beetles easily on the grown leaves. But अगर एक beetle को ये green color मिल गया है, so that beetle will not be picked up by the crow. So that means this green color has given this beetle a survival benefit. So this is a useful variation for that beetle, and the beetle will pass this variation to next generations also. Gregor John Mendel, he conducted many experiments on the garden pea. Scientific name of garden pea is Pisum stivum. Mendel is known as the father of genetics also because he had a great contribution in the field of genetics. Okay, he actually gave the mechanism for the inheritance of character कि कैसे characters parents से next generation में pass होते हैं. Okay, so he conducted most of his experiments on this garden pea because number one,
they had variety of characteristics, means differences in the color, shape, color of the seed, height of the plant, etc. Secondly, this plant was self-pollinating, so and its lifespan was short, so results were coming earlier. Okay, so these are the few reasons why he chose this particular plant only. The experimentation of Mendel explained that characters are controlled by genes. So एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं वो जीन्स की फॉर्म में पास होते हैं. Okay, and these genes are present on the chromosome. And next he explained that there is a pair of gene controlling one character, और उस पेयर ऑफ जीन का नाम है अलील. और ये जीन्स जो हैं दे मे बी सेम, वी कॉल इट एज होमोजाइगस कंडीशन, और मे बी डिफरेंट, वी कॉल इट एज हेट्रोजाइगस कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, हम टॉलनेस एक करेक्टर लेते हैं, ओके, एंड बी जस्ट सिंबलाइज द जीन्स विद अ कैपिटल टी. ओके, सो दे मे बी सेम लाइक कैपिटल टी टी, or we call a small tt, that is the gene for short height, right? They may be different also, that means one capital and one small. This is known as heterozygous. And if the condition is heterozygous, अब अगर ऐसी heterozygous condition है तो उसमें क्या होगा? ऐसी कंडीशन में दोनों में से एक जीन एक्सप्रेस करता है, मीन्स आउट ऑफ दीज टू ओनली वन जीन कैन गिव इट्स कैरेक्टर इन द ऑर्गेनिज्म. जो जीन अपना कैरेक्टर शो करता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन. ओके, मीन्स दैट इज एक्सप्रेसिव, वो इफेक्टिव जीन है. बट द अदर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस शॉर्ट टी कैन नॉट एक्सप्रेस इफ कैपिटल टी इज देयर. तो कैपिटल टी के होते हुए स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको हम कहते हैं रिसेसिव जीन. सो जीन्स मे बी डोमिनेटिंग और रिसेसिव इफ द कंडीशन इज हेट्रोजाइगस. मीन्स जो डोमिनेटिंग जीन होता है वो अकेला ही अपना इंप्रेशन दे सकता है. ओके, मीन्स अगर टॉलनेस का जीन कैपिटल टी एक भी प्रेजेंट होगा किसी ऑर्गेनिज्म में और ये डोमिनेटिंग है, सो दैट मीन्स दैट पर्सन विल बी टॉल. Small t will be only expressive if it is in the paired condition. मतलब अगर small t ने प्लांट को शॉर्ट बनाना है तो उसका दूसरा पेयर भी small t ही होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है. ओके, जो पेयर ऑफ जीन्स हैं मे बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट डजंट मैटर. दीज टू जीन्स गेट सेपरेटेड at the time of gamete formation. That means in the gametes only one of the pair is there. You know that male produces sperms and female produces egg. Okay, and when both of them combine together, तो जो यहाँ से half copy आई थी that will combine in the next generation. ओके, और नेक्स्ट जनरेशन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेयर्ड कंडीशन रीस्टोर हो जाती है. इसको मेंडल ने दो लॉज की फॉर्म में समअप किया था. द वेरी फर्स्ट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट एक्सप्लेन्स दैट पेयर्ड जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. एंड in the heterozygous condition, only one gene which expresses itself is known as dominant gene, and other which does not express in the presence of dominant gene is known as recessive gene. This was the law of dominance. He made a cross between two plants by taking one character. So Mendel ने इन दोनों laws को explain करने के लिए एक monohybrid cross किया. Now what is this monohybrid cross? A cross made between two plants choosing one contrasting character. Only one character को हम choose कर रहे हैं, जैसे tallness, height is a one character we are choosing here. Other may be the color, only one character as a color is chosen here, pink and white. So what did he found that in the F1 generation all the plants were tall. Okay, and when the tall plant of F1 generation were crossed again, he found that the tall and the short plant were found in the ratio 3:1. To which he explained that the gene of tallness is a dominating gene, whereas the gene for dwarfness is a recessive gene. The recessive gene only expresses itself in paired condition.
right? Same experiment was done with the choosing flower color as one of the characteristics. He made a cross between purple and white flower, and in F1 generation he found all the flowers were of purple color, which explained that the purple color is dominating over the white. Okay, and in F2 generation the purple and white flowers were found in the ratio 3:1. Now he made a cross between two plants taking two contrasting characters, that is the shape and color of the seed. One he took the round yellow and other wrinkled green. So in first generation he found all the seeds were round and yellow. That means round shape and yellow color is dominating. Okay, when he made a cross between two plants from F1 generation, he found that the round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green were found in the ratio 9:3:3:1. Okay, after performing this experiment, Mendel gave the law of independent assortment. According to this law, the genes of a character express themselves independently, means expression of one type of gene does not depend upon the expression of others. Means जो genes हैं किसी एक character के genes अपना एक्सप्रेशन देने में इंडिपेंडेंट हैं, उनका एक्सप्रेशन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. दैट मीन्स कि राउंड अगर शेप है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज बी राउंड विद द येलो कलर. ओके, बिकॉज राउंड के साथ ग्रीन सीड्स भी आए हैं. सो सिमिलरली रिंकल्ड वॉज नॉट ऑलवेज फॉलोड बाय द ग्रीन कलर बिकॉज रिंकल्ड और येलो भी आए थे. दैट मीन्स जो कलर का जीन है उसका शेप के जीन से कोई वास्ता नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट टू गिव देयर ओन एक्सप्रेशन, राइट? सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नाउ व्हाट डू वी थिंक कि क्रिकेटर का बेबी क्रिकेटर ही बनेगा, सुपरस्टार ही बनेगा, और एक अच्छा म्यूजिशियन एक सिंगर है तो उसका बेबी भी सिंगर ही होना चाहिए. साइंटिस्ट बेबी हैज टू बी साइंटिस्ट ओनली? नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज some of the traits which are present in the organism starting from the birth, because what we acquire from our parents are known as inherited trait, और inherited trait आते हैं genes के थ्रू, राइट? लेकिन क्रिकेट को खेलना, सिंगिंग और स्टडी करना और आर्ट ऑफ ड्राइंग, डांसिंग, स्विमिंग एट्सेट्रा, these are all skills which man acquire during the lifetime by its own practice. राइट, सो दैट मीन्स जो कैरेक्टर हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट. और आपको मालूम है पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आता है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, राइट? वेयर एज जो कैरेक्टर हम लोग अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं दे आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स. उसको हम लोग इंडिविजुअली लर्न करते हैं, राइट, एंड प्रैक्टिस करते हैं. सो जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं लाइक स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर एटसेट्रा वी गेट फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड अदर्स वी स्किल्स वी डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स. अब जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट बिकॉज दे आर लिंक्ड टू द जीन्स, क्योंकि ये जो हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं वो जीन्स के साथ लिंक है, इसलिए दे विल पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. बट जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो जीन्स से लिंक नहीं है. दे डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द डीएनए, सो दे डू नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था कि उन्होंने क्या किया, माइस के कुछ जनरेशन को ब्रीड किया कंटिन्यूसली बाय कटिंग द टेल्स. एक जनरेशन में टेल्स काट दी और उसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी थी उसको ऑब्जर्व किया. What they found, the next generation was also having tail. Again they cut their tails, but the next generation was also tailed mice. Okay, that means cutting of tail is not changing their genes. DNA और जीन्स में जब तक चेंज नहीं आएगा वो एक जनरेशन से नेक्स्ट में पास नहीं होगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इनहेरिटेड एंड द एक्वायर्ड ट्रेट, that whatever we get during our lifetime, okay, that do not bring about change in the DNA, and they are known as acquired trait, like ability to dance, draw, sing, etc. Whereas the character we get from the parents, like shape of the eye, nose, hair,
the ear, lobe, etc. These are inherited traits because they are linked to the genes or DNA. So they pass from one generation to the next.